Let us continue. Let us take up a board problem. Let us start with the first question. So जो formula लिखा दिया that you can write them down. Let's start with the first question. The question is Ajay owns 560 shares of a company. So we know number of shares is 560. Continue reading. The face value of each share is rupees 25. Face value bolo ya nominal value bolo, it's one and the same thing. The company declares a dividend of 9%. Calculate the dividend that Ajay will get. So first we can in exam write like this: number of shares is equal to 560. Next is face value or nominal value of one share is equal to rupees 25. Then they have said rate of dividend. Rate of dividend is equal to 9%. First question is we have to find out the dividend that Ajay will get. So let us find dividend per share. Dividend per share means on one share is equal to 9% of nominal value or face value. So with this you can calculate 1s are 4s are. So this becomes rupees 2.25, right? Rupees 2.25. But you want how much dividend Ajay is getting over 560 shares. Therefore, dividend on 560 shares will be equal to 560 into 2.25. This will become rupees 1260. So first question is over. First subpart. Second part, the rate of interest Ajay will get on his investment. If Ajay has paid rupees 30 per share, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना अजय ने नॉमिनल वैल्यू में ही लिया था. He could have purchased at a higher or a lower price. So वो दिया है 30 रुपीज़ दिया. So rate of interest क्या होता है? Rate of interest which you want to find is equal to, क्या करेंगे, इसका इनकम कितना है, तो इनकम तो हमें मालूम है 1260 अपॉन हिज टोटल इन्वेस्टमेंट into 100. This will give you the answer in percentage. So let's evaluate. Income, as you can see above, income is nothing but his dividend only, which is 1260 upon his investment. See, Ajay is owning 560 shares and each is costing 30 rupees. So his total investment is 560 into 30 into 100. Let's evaluate this. Your zeros get cancelled out and then you are left with 3 here. So 3 1s are 3 4 20s are, and then 7 looks like a clean factor. 7 6 are 42, 7 8s are, and 60 upon 8 we can manage. It will be 7s and then 4 will remain, so 5 times, so 7.5%. Bas, this is your answer. So rate of interest is 7%. Here if you can recollect, हमने ऐसा भी एक डेरिवेशन करवाया था आपको एंड उससे मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यू आर गेटिंग. इफ यू कैन recollect that, we had said ROR into MV is equal to ROD into NV.
ऐसे कुछ पढ़ाया था. तो you want ROR, right? Rate of return you want. Into market value is 30 rupees. Rate of dividend they have given to you in the beginning only, which is 9%, and nominal value also they have given is 25. Let's see whether we get 7.5% in this also. So your ROR is equal to 9 into 25 upon 30. 5 5s are 5 6 are, and then 3 3s are 3 2s are. So it is giving you 15 upon 2, which is 7.5%. So even this formula is fine, whichever you are comfortable with. ठीक है. So this was asked in 2007. We have written all steps in detail. You can go through them. Let's take up one more question. Let us take up one more question. इस बार भी एक board question लेते हैं, so that you get more idea about what type of questions usually are seen in exam. Let us take again a board question. So question goes as, Amit Kumar invests rupees 36,000 in buying rupees 100 shares at a premium of rupees 20 rupees premium. तो market value 100 plus 20 हो गया 120. The dividend is 15% per annum. First question, find the number of shares he buys. Let's begin. Let us directly solve the first one. Number of shares. So number of shares will be, number of shares is equal to his investment upon market value of one share. Yes or no? Yes. So it becomes 36,000, and market value of one share is 120, as it was at a premium. If it was discount here, we would have subtracted 20 from 100. In the meanwhile, this is now calculatable for you. 0 0 goes, and then 12 3s are 36. So you have number of shares is equal to 300. Let us see the next question. His yearly dividend. His yearly dividend. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, yield भी बोल सकते हैं. ठीक है. His yearly yield या dividend. तो dividend, just like the older sum, we can do dividend on one share or per share is equal to, what is the dividend declared? 9% बोला. So it will be, right, dividend is 15%, sorry, not 9%, it is 15%. So it is 15 upon 100 into face value is 100 rupees. So this is rupees 15 per share. Therefore dividend on 300 shares will be equal to 300 into 15 is equal to rupees 4,500. Let us see the third part. It's a 4-mark problem. See the third part. The percentage return on his investment. इसको rate of return भी बोल सकते हैं. And give your answer correct to the nearest whole number. ये नहीं बोलना, else you will lose. Sorry, यहाँ 4 problems नहीं है, 3 parts ही है, वो round up करना था. तो यहाँ आ जाएगा, let's use that formula, ROR into MV
is equal to ROD into NV. So ROR पूछा है, MV is 120, ROD is 15 and nominal value is 100 rupees. Therefore ROR is equal to, we can write 15 into 100 upon 120. This cancellation is going to be 5s, 4s, so this is remaining as 1.25. 5 upon 4 is 1.25 into 10 will be 12.5%. Therefore rate of return is equal to 13%, and in bracket write to the nearest whole number. Nearest whole number. So if this was 12.4, then we would have written 12%. If this first digit is 5 or greater than 5, we will round it up to the higher whole number. ठीक है? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. वो देख लेते एक बार. देखो क्या लिखा है. गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर. इफ द स्टेटमेंट वाज नॉट देयर, then we would have ended at 12.5%. Let us take one more board question. चलो इस बार 2002 का लेते हैं. 2002 बहुत पहले. A man wants to buy 62 shares available at rupees 132. Available at rupees 132 मतलब अभी मार्केट वैल्यू ये है, और वैल्यू ऑफ रुपीज़ 100 ब्रैकेट में दिया है, मतलब ये नॉमिनल वैल्यू हो गया. हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट. ठीक है, तो डायरेक्टली सॉल्विंग करते हैं. स्टेप्स क्या लिखना है वी हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट प्रॉब्लम. ओके, लेट मी राइट दिस वन मोर टाइम. नंबर ऑफ शेयर्स is equal to 62. Then market value of one share is equal to rupees 132. Nominal value of one share is equal to rupees 100. First question, how much should he invest? So he is going to get it at market value only, that is why वो value दिया. So man should invest how much? Number of shares into market value of one share. ठीक है. So number of shares is how much? 62. Market value 132. ये देख लेना and check if you are getting 8184 rupees. Second part, if the dividend is 7.5%, what will be his annual income? तो पहले क्या फाइंड करते हैं, हमेशा की तरह डिविडेंड पर शेयर कर लेते हैं. लिखो डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू, क्या है रेट ऑफ डिविडेंड? 7.5% बोला. सो राइट, इज इक्वल टू 7.5 अपॉन 100 of the nominal value, which is 100 only. So this becomes rupees 7.5. Therefore annual income, which means nothing but dividend from
62 shares is equal to 62 into 7.5. So 7.5 into 2 करोगे तो 15 आएगा, कैरी 1. 7.5 into 6 will be 45 and 1 is 46. तो ये हो गया ये मैन का एनुअल इनकम. Let's check out the third question. If he wants to increase his annual income by rupees 150, how many extra shares should he buy? So he wants to increase his annual income by rupees 150. So आपको तो मालूम है कि number of shares is equal to dividend, मतलब कि total dividend upon dividend per share. मतलब अगर आपको मालूम है कि टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा है अपॉन डिविडेंड पर शेयर कितना दे रहा है कंपनी, देन यू कैन गेट द नंबर ऑफ शेयर्स. नाउ दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ डिविडेंड ऑफ 150 रुपीज़ एंड व्हाट इज़ द डिविडेंड पर शेयर? रुपीज़ 7.5 हमें अभी ऊपर मिला था. So this calculation will give you is equal to 20. Therefore, man should increase his, वही बोला ना, how many extra shares? So right, man should buy 20 extra shares. 20 extra shares, then his income will increase by rupees 120. ये बाई लिखा है, ये बाई लिखा है, ठीक है. So these type of questions come in board exam. एक और देख लेते हैं. Let's take up one more. Let's take up one more question. थोड़ा अलग लेते हैं इस बार. Let's not take a board question. Say कौन सा ले, चलो ये वाला एक लेते हैं. Okay. Question is, a man sold 400 रुपीज़ नहीं लिखा है यहाँ, 400 लिखा है, मतलब ये नंबर ऑफ शेयर्स है. रुपीज़ 20 शेयर्स, मतलब एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 20 रुपीज़ है. पेइंग 5% एट रुपीज़ 18 में, ये उसका सेलिंग प्राइस है या ये इसका मार्केट वैल्यू है अभी एक शेयर का. एंड द इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स मतलब जो भी पैसा इसमें मिला अभी वो आगे कुछ और इन्वेस्ट कर रहा है. इन रुपीज़ 10 शेयर्स, मतलब दिस इज़ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द न्यू शेयर. पेइंग 7%, सो दिस इज़ द रेट ऑफ डिविडेंड at rupees 12, this is the market value. How many rupees 10 shares did he buy and what was the change in his income? ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं. Man sold 400 rupees 20 shares, paying 5% at rupees 18. So सबसे पहले तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? डिविडेंड ढूंढना पड़ेगा कि ये शेयर्स उसको कितने डिविडेंड दे रहे थे. सो पहले क्या करते हैं, एज यूजुअल डिविडेंड पर शेयर फाइंड कर लेते हैं. तो ये होगा 5/100 into 20, not 18. So this gives you 100/100. This gives you 1 rupee per share. Therefore, dividend on 400 shares is equal to rupees 400 हो जाएगा, 400 into 1. But now the story is that this person has sold his 400 shares at rupees 18 and जो पैसा मिला वो उसने आगे इन्वेस्ट किया. So
लेट अस फाइंड आउट. इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, आंसर एक है राइट. ऐसे कर लेते हैं. अमाउंट ऑब्टेन्ड आफ्टर selling 400 shares at rupees 18 is equal to 400 into 18 is equal to rupees 7,200. Now this amount that he has got, he has invested in the proceeds. ऐसा कुछ नहीं बोला है थोड़ा पैसा इसमें से निकाल दिया, तो हमको अज्यूम करना है कि पूरा पैसा उसने आगे इन्वेस्ट किया है इन बाइंग शेयर्स एट ₹12, जिसका नॉमिनल वैल्यू ₹10 था. तो वो थोड़ी है, अभी तो हमें तो 12 में मिल रहा है. सो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेते हैं. नाउ नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इज इक्वल टू, यस 700 अपॉन करेक्ट 12 आएगा. 700 अपॉन 7,200 अपॉन 12 आएगा. दिस विल बिकम इक्वल टू 600. हियर डिविडेंड पर शेयर फाइंड कर लेते हैं. डिविडेंड पर शेयर कितना बोला था क्वेश्चन में? 7% है. तो 7 अपॉन 100 ऑफ द नॉमिनल वैल्यू. व्हाट इज़ द नॉमिनल वैल्यू? 10 रुपीज़ था. So this will give you 0 गया. So this will give you rupees 0.70 है ना. 7 upon 10 rupees 0.70. 70 क्यों लिखा है? If you have seen earlier videos मैंने बोला कि आपको पैसे में 2 digits लिखना. Therefore dividend for how many shares? 600 shares आपको तो चाहिए, is equal to 600 into 0.70, which will 7 6 are 42 is rupees 420 है ना. इस डिविडेंड ऑन लिख देता हूँ. सो डिविडेंड ऑन 600 शेयर्स इज दिस मच. बट अगर आपने पहले देखा है तो उसको कितना डिविडेंड मिला था? डू यू रिमेंबर? यस, देखो यहाँ इक्वेशन 1 लिखा है. डिविडेंड ऑन 400 शेयर्स 400 मिल रहा था और अभी 420 मिल रहा है. एंड पूछा क्या? व्हाट वाज द चेंज इन हिज इनकम. इनकम मतलब डिविडेंड. तो उसका चेंज कितना हुआ? लिखो. देयरफॉर चेंज इन हिज इनकम इज इक्वल टू ₹420 minus 400 is equal to ₹20, and in bracket mention increases. ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर. नो सपोज यहाँ 380 हो जाता, मतलब इनकम कम हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं? 400 माइनस 380 करते हैं. लेकिन ₹20 आएगा तो उसको क्या लिखोगे? डिक्रीजेस. उसकी इनकम डिक्रीज हो गई, ये डिक्रीजेस लिखा. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. आई एम सेइंग कि इफ इंस्टेड ऑफ 420 इट वुड हैव बिकम लेस इनकम, देन ऑल्सो डोंट राइट -20, डोंट राइट माइनस साइन, इंस्टेड राइट इन ब्रैकेट डिक्रीज हो गया. अगर आप 380 माइनस 400 करोगे तो -20 आता, इसलिए बोल रहा हूँ. तो आप लिखो हमेशा पॉजिटिव रुपीस, ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर देना इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ. ठीक है. सो दिस वॉज नॉट अ बोर्ड क्वेश्चन. एक और कर देते हैं. चलो फिर से एक बोर्ड क्वेश्चन करा दो. कौन सा कराया अभी आपको? चलो लेटेस्ट कराता है, 2020 कराता है. 2020 क्वेश्चन लेते हैं. 2020 लेते हैं. सो धीरे धीरे यू विल गेट कॉन्फिडेंस. बस थोड़ा सा लिखते रहना. इफ़ यू विल राइट यू विल गेट इट बेटर. समझ के तो आएगा, बट देख के तो आएगा, बट लिखोगे तो बेटर होगा.
एक और करता, दिस इज अ 2020 क्वेश्चन. Question goes as: a company with 500 shares of nominal value rupees 120 declares an annual dividend of 15%. ठीक है, तो बहुत कुछ दे दिया, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड का परसेंटेज एंड नंबर ऑफ शेयर्स. फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी. एज यूजुअल लेट अस फाइंड डिविडेंड पर शेयर. Dividend per share will be equal to 15% of 120. ये गया, सो ये 180 अपॉन 10 हो गया, विच इज ₹18 हो गया. You want the total amount of dividend, therefore for 500 shares, therefore dividend, ये क्या हो गया, therefore dividend on 500 shares is equal to 500 into 18 करना पड़ेगा. This will be 5 18s are 90 and 2 0 है, so this person will get ₹9,000 as his dividend from the company. Second question is, annual income of Mr. Sharma. एक मिनट, एक बार वापस पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन में लिखा है अ कंपनी विद 500 शेयर्स, तो कंपनी के पास ही 500 शेयर्स है, तो कंपनी इतना पैसा डिस्पर्स करेगा. क्वेश्चन नंबर 1, अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी. सो आंसर यही है, बट इंटरप्रिटेशन के कंपनी के पास 500 शेयर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु इज ओनिंग 80 शेयर्स इन दिस कंपनी. सो एक शेयर पे 18 रुपीज़ है, तो मिस्टर शर्मा को 80 इंटू 18 मिल जाएगा. आगे पढ़ लेते हैं. इफ द रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा, if the return percent of Mr. Sharma from his shares is 10%, मतलब rate of return, find the market value of each share. ठीक है, ये भी कर लेते हैं. तो फॉर्मूला था ना ROR इंटू MB, वो वाला करते हैं. पहले ये कर लेते हैं. फॉर 80 शेयर्स या डिविडेंड ऑन 80 शेयर्स, इज इक्वल टू, ये 80 कर देते हैं, 80 इंटू 18, तो बता दो 80 इंटू 18 कितना होगा, 144 होगा, तो 01440. एंड फॉर द लास्ट पार्ट लेट्स ट्राई रिकलेक्टिंग आवर फॉर्मूला. थोड़ा अलग है बट बहुत काम का फॉर्मूला है. ROR into MV is equal to ROD into NV. You want ROR and नहीं, you want market value चाहिए. ROR तो दिया था ना 10% है, तो let's write 10 into MV. What was the market value? What is the market value of this one share? Sorry, what is the rate of dividend? 15%. Rate of dividend 15% है, and nominal value 120 रुपीज़ है. तो रेट ऑफ डिविडेंड में 15 लिख देते हैं एंड नॉमिनल वैल्यू में 120. तो क्लियरली द 2 zeros can get cut. So market value is rupees 1512 180. यही है आपका आंसर. Market value of one share is rupees 180.